Hi everyone, how are you? Okay, dears, this is Rana Sir. Welcome to our Rana Sir educational channel. Today I will talk on a topic whose name is motion in a straight line. In this chapter, that is the chapter number 2 of class 11th physics. Here I will explain, that is, I will derive third equation of motion by using the integration method. In previous classes, I have already described it, that is explained with the help of integration method. First and second equation of motion already I have derived there. Now today I will derive, that is prove the third equation of motion by using the method, that is integration method. So previously I have already explained all this equation of motion by another method, but here I am going to use to derive the third equation of motion by using integration method. So you concentrate on this live video from starting to end to improve your knowledge, that is improve means update and develop your knowledge at this point, and simultaneously you subscribe this education channel with your colleagues, friends and students, so that they can also improve their knowledge on this topic. Now one additional information I am also going to say you subscribe this educational channel more, and this educational channel name is Rana Sir UP Kushinagar. And one another additional information I am going to tell you, you follow it positively, properly and safely. First of all, you have to take one notebook, one pen, and then you have to sit at your location properly, and then you have to write all informations that is available on the blackboard, and also which information you are knowing very well, so you write on your notebook for further revision, that will enhance your life. Okay, so you firstly follow it. Now I am going to start its solution, and this solution, first of all I will explain in English, and then I will translate all information in Hindi also. If students who are reading in English medium, so those students can also understand these information in detail, and students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, so those students can also understand these information clearly. Okay, this is important because here I am going to use the concept of integration in physics, because mathematics is the calculation of physics, so you have to positively obey it. Now if you will understand each and every information where I am going to use the concept of integration, so your mathematics will be also strong, because this concept will be also there in mathematics, because mathematics is totally taken from the physics. In other words, we can say that mathematics is derived from the physics. Okay, students, so positively you concentrate on this live video from starting to end, and also you take, this is totally free online coaching classes, and you take its advantage more and more. Okay, students, so positively I am going to start this live video. So here I have written class 11th, 11th, that is in English medium, Hindi medium physics, and it is also based on NCERT patterns. Okay, so here my question is this term is taken from the uh, motion in a straight line. Here we have the to prove the third equation of motion by integration, by using integration method or by integration method. So that third equation, I know v square is equal to e square plus 2as. So this identity I will prove with the help of integration method. So here I am going to use the concept of integration, and you know here
how we are going to use the concept of integration, and then I will explain, that is I will derive this equation, that is v square is equal to u square plus 2as. So you positively you concentrate on this topic positively, safely, and also properly you sit at your location for getting these information. So first of all you have to write here solution. After writing solution, and then you have to write what is the definition of acceleration. Each and every students are knowing acceleration is the change in velocity per unit time, that is called acceleration. In other words, we can also write here, if a which is equal to, I will write change in velocity per unit time. Suppose that if any object which is moving from a point A, a object which is moving from the point A, and after some time that object reached at point B. So I will say this is the object that is available at the point A and the object which is available at the point B. So if object will start, so that object will have initial velocity. So here I will write initial velocity, but that object will reach at the point B. So I will say that that object will have velocity, that is final velocity, and that final velocity will be written with symbol small v. Okay student, now if object is moving from point A to B, so that object will have time. So that time I will write here t. But suppose that if I will take a particular distance, if I will take a small distance, so I will say that small distance, that is the change in velocity, because starting velocity is written as u and the final velocity is written as v, but I will take this distance. So the change in velocity will be delta v, and change in time will be delta t. Therefore, I have write here. Now, one additional information I am going to explain here. If I will take the limit value from the left hand side, here I will say I am calculating left hand side, and then I will also calculate the limit value from the right hand side. If I will calculate the limit value from the left hand side and also from the right hand side at the given point delta t which is equal to 0, in this case I will say both limit value will be same. So in this case, if limit value will be same, left hand side limit and right hand side limit will have same, limit value will be same. So I will write here limit delta t tends to 0. So this information I will write here clearly. Okay, so if you are getting any confusion, yeah, you are understanding very well, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends, and students, so that they can also improve their knowledge on this topic. So during this distance, I will say the change in velocity will be delta v divided by delta t, because time will be delta t. This is the smallest distance. So I will take its left hand limit value and right hand limit value. Both will have same value. Therefore, I will write here limit delta t tends to 0. So here I will write limit. Here I will write limit, that is delta t tends to 0. So here I will write limit delta t tends to 0. Delta t tends to 0. That information I will write here properly. So acceleration. Acceleration is the change in velocity per unit time. So here I have considered a small distance. So change in velocity in smallest distance will be delta v divided by time will be also delta t. So this is the acceleration. Now if I will calculate, now one additional information I am going to say, this is the delta and its value is difference, d I double f e
RENCE, difference. So difference is start with D value. So delta is also represented with D. So I will write its name. Okay, student. After explaining this information in English, so I will also explain this information in Hindi also. Okay, student. So here acceleration, in the place of acceleration I have to write a, and the limit, if I will take the limit value delta v divided by delta t, so from a to b I can write that is dv divided by dt, because delta is converted into small d, because d is used in difference, and difference has started with small d. So I have written here delta dv divided by dt means change in velocity divided by change in time, that is also known as acceleration. So the meaning of acceleration, yeah, concept of acceleration, I can write a is equal to dv divided by dt, means a is also known as acceleration. So here I will write acceleration, a double c e l e r a t i o n. So I will say this is the acceleration. So acceleration a is equal to dv divided by dt. Okay, students, so I hope that you are doing very well. So I will also use some compensation to write this information in unit form. Okay, so this information I am going to erase. Now further I will simplify. In the place of dv divided by dt, I can write dv divided by dt into 1, because if any number or any quantity which is multiplied with 1, that will be the same value. So we can write dv divided by dt. Here there is no doubt. Okay, student. So in next step I will write here in the left hand side acceleration will be a. Now here a is equal to, now dv divided by dt, I have to write here dv divided by dt. Now in the place of 1 I can write ds divided by ds. If I will divide, if I will cut, yes, simplify ds divided by ds, that will be 1. In the place of 1 I can arrange like this, ds divided by ds. Okay, now further I will simplify and then I will explain how I am doing like this. Okay, now the information I am going to translate in Hindi, so that students who are reading in Hindi medium, that is in UP board, those students can also understand these informations in detail. Okay, तो यहाँ पर कहा गया है कि सीधी कीजिए कि जो गति का मोशन मीन्स गति का जो थर्ड इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन है, उसको इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन, समाकलन, इंटीग्रेशन का हिंदी होता है समाकलन। इस समाकलन मेथड के मेथड होता है विधि। इस समाकलन मेथड को यूज करके आप सिद्ध कीजिए कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v को जो होता है अंतिम वेग करते हैं और u को जो होता है प्रारंभिक वेग करते हैं, a जो होता है त्वरण होता है, s जो होता है दूरी को रिप्रेजेंट या डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ पर लिखें, सॉल्यूशन का मीनिंग होता है हल। उसके बाद से हम जानते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण का परिभाषा। त्वरण का परिभाषा होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। तो डेल्टा v मतलब यह होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि कोई एक बिंदु ए है, उस बिंदु पर हमको वस्तु रखा गया है और वो वस्तु जो होता है किसी फोर्स से होता है ए से मूव करके बी बिंदु पर चला गया है, और बिंदु बी पर ए से बी पर चला गया है, तो ए से बी तक जाने में टाइम टी लगता है, लेकिन हम एक छोटा डिस्टेंस ले रहे हैं, एक छोटा विस्थापन दूरी लेते हैं, और इस छोटा विस्थापन में हमारा जो
चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, वेग में परिवर्तन जो होगा v2 माइनस v1 होगा, दैट इज v माइनस u होगा। उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा v बटे डेल्टा t। जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और इसका राइट हैंड लिमिट के वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो डायरेक्ट हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पर उसको फाइंड आउट करते हैं। और जब इस टोटल इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं, डेल्टा का मीनिंग होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है, हिंदी होता है अंतर। डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर। चूंकि ये डिफरेंस डी से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर डी सिंबल को हम संकेत, सिंबल का मीनिंग होता है संकेत। इस डी सिंबल को हम संकेत को यूज करते हैं। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। ये त्वरण इज इक्वल टू डेल्टा वी डी टी, डी वी डिवाइडेड बाई डी टी होता है। अब डी वी डिवाइडेड बाई डी टी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या हमको मिलता है, तो इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। चूँकि हम इसको इस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं ताकि हमारा इक्वेशन प्रूफ हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर 1 की जगह पर, चूँकि इक्वेशन में हमको क्या होता है, यस लाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, यस की जगह पर 1 की जगह पर डी एस बटे डी एस लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद से इसको हम कंपनसेट करेंगे, ए की जगह पर ए लिख देंगे, ये डी वी बटे ये, इस डी एस को यहाँ पर लिख देंगे, डी एस को यहाँ पर लिख देंगे, डी एस यहाँ हो गया। उसके बाद से इंटू ये जो अंश में डी एस है उसको अंश में डी एस रखेंगे, और जो हर में डी टी है उसको, उस डी टी को यहाँ पर हम अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से अरेंज करके हम लिखेंगे ताकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन में जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल पूरा कर सकें। इसलिए ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी वी बटे डी एस इंटू डी एस बटे डी टी। इस डी एस को यहाँ रखेगा, इस डी टी को यहाँ पर रखते हैं। इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। अगर इसमें किसी तरह का डाउट है तो उस डाउट को जो है कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली पूछेंगे, और उस कमेंट सेक्शन को हम पॉजिटिवली रीड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसके सॉल्यूशन को पॉजिटिवली रिप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में समझ में आ रहा है तो इस इंफॉर्मेशन में आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। चैनल नेम जो होता है राना सर यूपी कुशीनगर है। ओके स्टूडेंट, तो पॉजिटिवली जो होता है ये इंफॉर्मेशन को हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद से हम जो अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, जो जिसका ज़रूरत नहीं है, उसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हम अपने डेस्टिनेशन की ओर फॉरवर्ड होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर इंफॉर्मेशन from this point, because here a is equal to also known as dv divided by dt, and if dv divided by dt I am multiplying with 1. Now in the equation s is available, so in the place of 1 I can write here ds but ds, because there is no change in my solution, so we can write now this ds I will put at this place dt, and this dt I will place in ds. So I can write a is equal to dv by ds into ds by dt I can write. Okay student, and a is also known as acceleration, you are knowing very well. Okay student, so information which are available on the blackboard which is not further you will be used, so I will erase and then I will simplify. So here a is written, so I can write a. Now this information I am going to write same, and after writing I will simplify it like this. So here I will say this is yes, and in the place of numerator I will write ds divided by dt. Okay, now here written information I will also erase. We have to concentrate on this point. Now any formula which is available, ds divided by dt, that is also known as velocity. The formula of velocity which is equal to ds divided by dt. Each and every students are knowing velocity is equal to, if velocity is equal to distance with time, because a to b I will say that is the yes distance, but I will take here a small distance, so that small distance will be ds, and change in that is small distance will be ds, and
time will be also dt. So velocity will be equal to ds by dt. So in the place of ds by dt, I can write v with this formula, with the help of this formula. So here I will write dv by ds into, in the place of ds by dt, I will write here v. If you have any doubts, so you ask your doubt in comment by writing your information in comment section, and positively I will see, and after looking your uh, query, I will reply the solution of your query in detail. Okay, student. So in the place of ds by dt, that is also known as velocity, and in the place of ds by dt, I can write here v. Okay, student. Now further, I can arrange v before. I can arrange v into dv divided by ds, and in the left hand side acceleration is available. So in the place of acceleration, I can write as a divided by 1, because if any quantity that has value a, and if I will divide with 1, that value will be same. So I can write here. Now here I will do cross multiplication for getting its solution. Okay, student. So this information I will also translate in Hindi, and then I will also explain the information further for reaching to the destination. My destination is b square is equal to u square plus 2as. So those information I will consider. Okay, student. Now here I am saying कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण। त्वरण जो होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं। त्वरण को हमने लिखा था पहले इस तरीके से कि ए इज इक्वल टू डी वी बटे डी टी। अब इंटू वन, वन की जगह पर डी एस बटे डी एस करेंगे, इसको सिंप्लीफाई की, इसको अरेंज किए अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। चूँकि हमको एस लाना है, इसलिए वन की जगह पर डी एस बटे डी एस को रखेंगे। उसके बाद से सिंप्लीफाई किए, डी वी बटे डी एस को ऐसे रख दिए। उसके बाद से डी एस बटे डी टी, हम जानते हैं डी एस बटे डी टी जो होता है चेंज इन वेलोसिटी होता है, दैट इज वी। सो डी एस बटे डी टी की जगह पर भी रखेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी जो होता है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम रख सकते हैं, क्योंकि एक क्रम विनिमय के नियम को फॉलो करता है, इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इसको राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पर हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद से जो इंटीग्रेशन के कंसेप्ट है, यहाँ पर कहा गया कि इंटीग्रेशन के मेथड से आप प्रूव कीजिए कि गति का तीसरा समीकरण भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो उस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई नो दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आफ्टर दिस step I will explain further. Okay, so above data I will erase. Now one information, when I will do here cross multiplication, so ds into a, I can write a into ds, that will be in the left hand side, but in the right hand side v into dv into 1. So here I can write v into dv into 1, I can write. Okay, so after writing I can write a into ds, which is equal to v into dv. So this information I can write. So after simplification I have got this expression. So I have got this expression. Further I will explain its uh, time duration. When time will be 0, so in this case I will get initial velocity will be u, but time will be t, so its final velocity will be v. But when time will be 0, so I will say displacement value will be 0, but time will be t, so displacement value will be s. So those information I will write here in detail. I will write when t is equal to 0, then final velocity, then here I will write final velocity will be v. So final velocity will be v. Okay, but again I will write when time is t. In this case final initial velocity, here time will be 0, so here initial velocity will be u.
Then here I will write initial velocity will be u. So this information I have to write. But when time is equal to t, then I will write final velocity will be v. So this information is very important, because here we have to write their lower limit value and also upper limit value. If we will know the concept of lower limit value and also upper limit value, then I can explain the above formula, that is v square is equal to u square plus 2as. That information I will explain in detail, because here suppose that here I will say t is equal to 0. T is equal to 0 in the figure, so initial velocity will be u, but time will be t. In this case, the final velocity will be v. Okay, at the point A, time is 0, so displacement, the value of displacement will be 0, but time will be t. In this case, displacement will be yes, because from A to B, displacement will be yes. So these are the information, and this information I will write in the equation number 1. And after writing, we will also use concept of integration method, that is concept of integration means samakalan method, samakalan bit. Then I will write, solve it, and after solving I will get the above expression, that is above identity, that is v square is equal to u square plus 2as. Okay student, if you are getting any confusion at any point, so you write your information in the comment section positively, and then I will give the solution of your question in detail. Okay student, now these information I am also going to tell you in Hindi, so student who are reading in Hindi medium, those students can also understand these informations in detail. Okay, तो हम जानते थे कि एक्सेलरेशन जो था, त्वरण जो था, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, और उसको हम डी वी बटे डी टी लिखे थे, लेकिन उसको 1 से मल्टीप्लाई किए थे, ताकि डी हमको इक्वेशन जो था एस की आवश्यकता है, इसलिए ये 1 की जगह पर डी एस बटे डी एस लिखे। उसको अरेंज करने के बाद से हमने 3x गुणा किया। 3x गुणा का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद से हम इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड आउट किए। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि जब टी का मतलब टाइम, जब टाइम 0 होता है, समय 0 होता है, तो उस केस में वेलोसिटी जो होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, उस इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम टी बराबर 0 पर वस्तु ए से बी को पहुंचता है, तो जब समय 0 होता है, उस केस में विस्थापन जो होता है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन जब टाइम टी हो जाता है, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी भी हो जाता है, और विस्थापन क्या होता है, यस होता है। यहाँ से ए से बी के जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन होता है, उसको हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इस कंसेप्ट को यूज करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर फंक्शन हमारा किसके रिस्पेक्ट में, यस के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट जब टाइम 0 होता है तो 0 हो जाएगा, लेकिन टाइम टी होगा तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा यस हो जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से यस तक, और राइट हैंड साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे जब वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी दिया गया, तो वेलोसिटी जब टाइम 0 होता है, तो उस केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है यू होता है, तो यहाँ पर हम यू रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर यू रिप्रेजेंट करेंगे। जब टाइम टी हो जाता है, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी वी होता है, तो यहाँ पर हम वी लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन लिखिए। तो इस इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए हमको कहना चाहिए कि दोनों साइडों में, दोनों पक्षों में जो होता है समाकलन करने पर, तो इस इंफॉर्मेशन को हम इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद से हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ दिस, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लिखेंगे वन स्टेटमेंट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ sides
वी गेट। दोनों तरफ जो होता है हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद से हम पाते हैं। लेकिन यह लो जी जो नीचे लिखा गया है उसको लोअर लिमिट करते हैं, जो ऊपर लिखा गया होता है उसको अपर लिमिट करते हैं। उसी तरीके से हम जीरो और यस कैसे मिला, जब टाइम जीरो होता है तो उस केस में विस्थापन का वैल्यू जीरो होता है और इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो होता है यू होता है, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन जब टाइम टी होता है तो उस केस में विस्थापन यस हो जाता है और फाइनल वेलोसिटी भी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको यू से भी हो गया और विस्थापन के इस केस में जीरो से यस हो गया। ओके स्टूडेंट, आई नो दैट यू आर डूइंग वेरी वेल because here when time is zero, so in this case I will say displacement will have zero value, but velocity will be initial velocity and that is represented with u. Now when time will be t, so in this case I will say, so final velocity will be v, so I have to write v, but displacement will be s from a to b. The displacement will be s, so its limit value will be from 0 to s and its limit value will be from u to v. Now I have to use this statement, and after using this statement and then I will solve the given information in detail. Okay student, so here integrating on both sides I have detail. So in Hindi I will say दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करते हैं जब समय जीरो होता है, उसके इसमें विस्थापन जो होता है जीरो होता है और जो वेग होता है वह प्रारंभिक वेग होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका लोअर लिमिट जीरो और इसका भी लोअर लिमिट यू। लेकिन जब समय टी होता है तो विस्थापन यस हो जाता है और अंतिम वेग जो होता है भी होता है, इसलिए विस्थापन यस हो गया, अंतिम वेग भी हो गया। ओके, इस कंसेप्ट को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया और इस कंसेप्ट को जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट होता है, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को भी हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ओके स्टूडेंट, सो यू कंसंट्रेट ऑन दिस लाइव वीडियो टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर 6 दिया गया, 6 इंटू डी टी दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम देखेंगे कि यह फंक्शन जो होता है टी के रिस्पेक्ट में है। जब टी के रिस्पेक्ट में यह फंक्शन को फलन करते हैं, फलन के रूप में है, तो इसके साथ जो वैल्यू है ये कांस्टेंट दैट इज अचर वैल्यू है। तो इस अचर वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 6 इंटू 1 इंटू डी टी। अगर हम इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे तो कोई डाउट नहीं होगा। 6 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई 6 इंटू 1, इसलिए 6 हो जाएगा और डी टी है तो डी टी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कंसेप्ट ये होता है कि इंटीग्रेशन के केस में अगर कांस्टेंट होगा तो उस इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं और यहाँ पर 1 इंटू डी टी बचेगा, 1 इंटू डी टी बचेगा। और ये साइन जो होता है, ये जो साइन होता है, ये साइन जो होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये साइन जो होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यह इंटीग्रेशन का साइन होता है, सिंबल होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल कहेंगे। तो अब हम 1 इंटू डी टी, यह एक फंक्शन है, एक फलन है जो टी के रिस्पेक्ट में, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के बाद से बाहर में 6 है तो 6 लिखेंगे, और जब 1 का इंटीग्रेट करते हैं तो टी के रिस्पेक्ट में है तो टी प्लस एक अचर कांस्टेंट सी को यहाँ पर हम लिख देते हैं। जितना इंटीग्रेट करेंगे उतनी बाद जो होता है कांस्टेंट को ऐड करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट जो होता है हर स्टेप में लिखा जाता है, तो इसको पोस्टली हम फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से अगर 6 का इंटीग्रेशन जो होता है टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 तो कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे, टी प्लस सी हमारा आएगा। उस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर इम्प्लाई दैट लिखेंगे। यहाँ पर ए जो होता है, यहाँ पर फंक्शन जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में है, ये जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको हम इसको लिख सकते हैं 0 से एस इंटीग्रेट करना है, और ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एस है, ए गुणे 1, ए की जगह पर जो होता है हम 1 ए इंटू 1 रख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ भी दिया गया है, तो इसका कंसेप्ट इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, फाइनल वेलोसिटी भी होता है, और यहाँ भी इंटू डी भी है।
तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में है और यहाँ पर फंक्शन भी के रिस्पेक्ट में है, तो भी यहाँ पर फंक्शन का एक पार्ट है। इसलिए यहाँ पर ए जो होता है कांस्टेंट है, इसलिए ए को जो होता है इस कंसेप्ट से, जो इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट होता है उस कंसेप्ट से हम ए को बाहर ले सकते हैं और बाहर लेने के बाद से ये इंटीग्रेशन जो होता है 0 से एस तक करेंगे और यहाँ पर 1 बचा इंटू डी एस करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ए को मैंने बाहर लिया तो इसको ए इंटू आई इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इजली आप अंडरस्टैंड करें। ए इंटू इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एस तक 1 इंटू डी एस, मतलब 1 को एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद से इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को आप इजली अंडरस्टैंड कर लिए हैं, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन को जैसे भी को भी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसका वैल्यू कितना आएगा। पहले पहले इस इंफॉर्मेशन को हम इरेज करेंगे, एबव इंफॉर्मेशन को इरेज करके हम इस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए इसको इरेज करना होगा। तो इस तरीके से सपोज कीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन एक्स है और एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स का पावर 1 है तो एक्स पावर 1, और एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो एक ऐड हो जाता है और 1 + 1 कितना होता है 2, और इसको इंटीग्रेट करते हैं उसके बाद एक अचर कांस्टेंट को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, एक्स का समाकलन जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में किए हैं, तो इसको एक्स का पावर 1 + 1 2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + c होगा। इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर भी है तो भी का पावर 1 है तो इसको लिख सकते हैं भी का पावर 1 + 1, अब 1 + 1 को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, अब प्लस एक अचर कांस्टेंट c को यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू दिया गया है तो इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, लोअर लिमिट को वैल्यू को u एंड अपर लिमिट का वैल्यू तो भी होता है। ओके, इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि स्टूडेंट हु आर रीडिंग इन इंग्लिश मीडियम in CBSE board, those students can also understand very easily, because each and every students are knowing a into ds. I have integrated from 0 to s, and also b into ds dv. I have also integrated from here into v. Now here I have used one concept, that is one statement like that, integrate on both sides, aggregate. So here a is constant, and here because function is available in the form of s. Now here a available here, that is an example I am going to tell you. If 6 into dt, because here function is available in the form of t. Now 6 is common, so 6 can be arranged like this, 6 into 1. Now 6 will be outside, so here will be 1 into dt. Now this function is available in the form of dt, so its integration of 1 dt will be t plus c, so c 6 will be outside. Similarly here I have taken a outside, so 1 into ds, so its integration will be s plus c, and lower limit will be 0 and upper limit will be s. Okay student, so you are doing very well. So above information I will erase, and after erasing there information I will simplify in detail so that you can understand very well. So here I can write a integration from 0 to s 1 into ds. Now on the right hand side b to the power 1 plus 1, so here I can write b squared by 2 plus c. Plus c is available, but its lower limit value is u and upper limit value is v. Okay, now value information I am going to erase, and after erasing above information I will simplify. So here I will write a, now integration of 1 with respect to s, that will be s plus c, and its limit value will be from 0 to s. Now on the right hand side I will also write v square divided by 2 plus c, and its lower limit value is u and upper limit value is v. I hope that you are doing very well. So after this step you have to put upper limit value at the place of
variable s, and lower limit value also at the place of s, and then I will write upper limit value in the right hand side and also lower limit value in the right hand side. Now information will be like this: a is coming, so I will put here upper limit value, that will be s plus c. Now here minus sign I will use itself, and then I will put lower limit value. So in the place of s, that will be 0, and in the place of s c, that will be c. So I can write like this. Okay. Similarly, right hand value I will write in the place of v, I have to put v, so that will be v square divided by 2 plus c. Now here I will put minus sign. So this minus sign is important, that is unit here itself. Okay. So here in the place of v, we have to write u. So here will be u square divided by 2, and c will be there. So here I will put c. Okay. So I hope that each and every students these informations they are knowing very easy way. Okay. If you are getting any confusion, so you write your information, that is query or question or your doubt in the comment section, and then positively I will see, and then positively I will reply the solution of your question in detail. Okay. So this information I am also going to explain in Hindi, so student who are reading in UP board, that is in Hindi, those student can also understand this information in डिटेल. ओके. अगर यहाँ पर दिया गया है एक्स एक फंक्शन है और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है, तो एक्स के पावर 1 है, तो इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स पावर 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, उसको 2 से डिवाइड, जितना पावर आएगा उससे डिवाइड करेंगे, प्लस एक और कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पर ऐड करेंगे, तो एक्स इंटू डी एस का इंटीग्रेशन है। उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया था भी इंटू डी वी का, उसको इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेट करने के भी स्क्वायर में 2 प्लस सी, और इसका लोअर लिमिट वैल्यू यू था और अपर लिमिट वैल्यू थी। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 1 इंटू डी एस को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में करें टी प्लस सी होगा, लेकिन यहाँ पर यस है तो यस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर यस प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर अपर लिमिट के वैल्यू को रखते हैं, जहाँ पे यस है तो यस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा, और ये माइनस साइन जो था हमेशा पुट करते हैं, इसको रिमेंबर करना है, इसलिए एरो यहाँ पर पुट किए ताकि आप इसको कंसंट्रेट करें कि अपर लिमिट के वैल्यू को रखने के बाद से माइनस करना होता है। उसके बाद से लोअर लिमिट के वैल्यू को रखेंगे, जहाँ पे यस है वहाँ पे 0 रखेंगे, प्लस सी पे यहाँ पर रखेंगे। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में अपर लिमिट के वैल्यू को रखिए तो ये मिला, उसके बाद से माइनस किए, लोअर लिमिट के वैल्यू को रखे तो ये मिला। अब इस ब्रैकेट को तोड़ के सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद से जो वैल्यू आएगा वो हमारा डेस्टिनेशन होगा, that destination is v square is equal to u square plus 2as. Okay student, I know that you are doing very well, so above information I will erase, and after erasing I will simplify below information for reaching to the destination. Okay student, so here I am going to erase positively. Now here I have to write imply that a. Now in the bracket I will write as plus c. Now this minus sign will go, so it will be also minus c. Okay, so I can write like this. Now on the right hand side I have to write v square by 2 plus c, and here will be minus u square by 2 minus c, because minus sign will go with this term and also go with this term. Okay, so I know each every students are knowing multiplication of plus into plus, that will be plus, but multiplication of minus into minus, that will be minus, but multiplication of plus into minus and minus into plus, that will be minus. So that concept I will use here properly. So here plus c or minus c will be cancelled out, plus c and minus c will be cancelled out. So after cancelling I will write the information like this. So a into s, so here will be as, which is equal to v square divided by 2 minus u square divided by 2. Further I will take LCM in the right hand side, so here I will write v square minus u square divided by 2. In the left hand side I have to write a into
Yes. Okay, student. If you are getting any doubt, yeah, any confusion, so you write your information in the comment section, and then positively I will reply post solution of your in detail. Okay, student. If you are understanding very well, so you like this live video, and also you share this live video with your colleagues, friends, and students, so that they can also improve their knowledge on this topic positively. Okay, and also you subscribe this educational channel more and more. That is educational channel name is Rana Sir UP Kushinagar. So each and every concept of class 11 physics that is available in Hindi or English medium, I will explain in detail, and also from the class 9th also. Okay, so further here I am going to say as is divided by 1, because if any number which is divided by 1, that will be same number. So now further I will do cross multiplication. So this term will be multiplied with this, and this term will be multiplied with this. Okay, so I will write this information in the bracket. So after multiplying, and then I will simplify. After simplification I will get the destination. Okay, student. So this information I am going to also explain in Hindi. तो हमने जब इंटीग्रेट किए थे एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी आया था। उसके बाद से लोअर लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए रखे हैं। रखने के बाद से जो होता है, जो टर्म कटेगा उसको कैंसिल आउट करेंगे, और जो टर्म बचेगा उसको रखेंगे। टर्म को कैंसिल आउट करने के बाद से लेफ्ट हैंड साइड में ए एस बचा, और राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर बटे 2 माइनस यू स्क्वायर बटे 2 मिला। उसको सिंप्लीफाई किए, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में जो टर्म है वो टर्म किस तरह का है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन है जो होता है 2 जो होता है, हमने एलसीएम ले लिया, उसके भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पहले। उसके बाद से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में तिर्यक गुणा करते हैं। 2 का गुणा जो होता है एस के साथ करेंगे, अब भी ब्रैकेट में लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से रखेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से हमारा डेस्टिनेशन मिल सकता है। ओके स्टूडेंट, तो एवं इंफॉर्मेशन जो दिया गया उस इंफॉर्मेशन को हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से जीरो पर जो डेटा है उस डेटा को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 इंटू ए एस, टू इंटू ए एस हो गया, 2 इंटू ए एस हो गया, और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। मल्टीप्लाई करने के बाद से हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में इम्प्लाई दैट लेफ्ट हैंड साइड में 2a इंटू एस मिला, और राइट हैंड साइड में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हुआ। किसी भी टर्म को जो टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेमी टर्म मिलता है। अगर कोई भी टर्म है उस टर्म में जो हमने एक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म आता है। इसलिए हम कहेंगे ये राइट हैंड साइड का डाटा है और ये लेफ्ट हैंड साइड का डाटा है। लेफ्ट हैंड साइड का डाटा टोटल राइट में ले जाएगा, राइट के टोटल डाटा लेफ्ट में आया। तो इस तरीके से हमारे सोल्यूशन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस हुआ। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर वो कंसेप्ट आल्सो अवेलेबल होता है। जब कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाए उस एक्सप्रेशन में कोई भी पार्टिकुलर टर्म लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आएगा तो उस केस में जो वो टर्म जो होता है पहले साइन था वो साइन जो होता है चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर यू स्क्वायर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस है, ये राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस कंसेप्ट को यूज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा प्लस में यू स्क्वायर प्लस 2as है। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से इसे एक्सप्लेन करेंगे कि यह इत सिद्धम दैट इज इंग्लिश में इसको करेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, so this information I will also translate in English. So student who are reading in English medium or student who are reading in CBSE board, those students can also understand easily, because here I have done cross multiplication. After cross multiplication I have got left hand value. This is the left hand value, left hand side value, this is the
right hand side value. So all right hand side value I will transfer in left hand side, and all left hand side value I will transfer in right hand side. After transferring, we have got v square is equal to minus u square is equal to 2as. Now one information, that is one concept I have to use here. If any one term that will go from left to right, yeah, right to left, so its sign will change, because if any term which will have negative sign, so it will go in right hand side, so that will have positive sign. Because here b square is equal to b square, but here u square is equal to minus sign, it will go in right hand side, it will have u square value, so u square plus 2as. So this is the third equation of motion I have derived with the help of integration method, that is Samakalan method. So v square is equal to u square plus 2as. This is the required third equation of motion. I have already explained that it is described with the help of integration method. In Hindi that is called incident, but in English that is called in hence proved. Okay student, so these are the information, and these information you have to know clearly. Okay, if student who are missing any class, so those students need to go in my video section, and then those students need to go in my playlist section, and all data I have organized there chapter wise, that is all data are available. Class 12th mathematics, class 12th physics, class 11th physics, and class 11th mathematics, class 10th mathematics, and class 10th physics are also available there. So student need to go there, and all data are available in Hindi medium and also in English medium. In live section only data are available in English medium, so student need to go and need to learn according to requirement. So these information I have arranged for you. This is free online coaching classes, and you take advantage. Okay, you take this advantage. Okay, because if you will understand and if you will concentrate properly, so each and every information you will know, and your mathematics and your physics will be more strong, that is very strong. Okay, so according to this way I have already discussed with you. So thank you for watching. So always I uh, be online 30 minutes past to 7 o'clock to 30 minutes past to 8 o'clock. So the duration I am going to write here, so you also know time duration. Time duration, yes, time slot. Time slot is 30 minutes past to 7 p.m. up to 30 minutes past to 8 p.m. Always I will be present on this time duration, because only on Sunday will be holiday, but other time Sunday I will be always present on this time slot. And if you are understanding, yeah, you are getting any confusion, so you ask your confusion by typing in comment section positively. Okay, so I will explain each and every informations of the physics, and also each and every informations of the mathematics. Okay, so these are the information, and these informations are totally free online coaching classes, and you take its advantage more and more. Thank you for watching. I will meet you next day on the same time. Jai Hind, Rana sir.